تعلیم ہر لیول پہ معذور لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے, شروع سے اسکولنگ کے اور ہائر ایجوکیشن تک اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. جو کہ اپرچونیٹیز ہیں وہ پوری نہیں ہوئی جا رہی, کیونکہ بیس لائننگ جو ہوئی ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر وہ بڑا ایکسکلوسو بیس لائننگ ہوئی ہے اور انکلوسیو کبھی نہیں بنی. تو شناخت ہو گئی, فلاح و تعلیم ہو گئی. جو لوگ عمر سے نکل گئے تعلیم کے, ان کے لیے ہم ہنر پہ فوکس کرتے ہیں. ہم پورے پاکستان میں ہم نے برٹش کاؤنسل کے ساتھ ایک بڑی کمپریہنسو اسٹڈی کی تھی 2 سال کی, جس میں ہم لوگوں نے 22 سے 23 ٹریڈ نکالے تھے اور ہنر نکالے تھے جس کی مارکیٹ میں بھی ضرورت ہے اور جو معذوری کے لحاظ سے ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل ویژولی امپیئرڈ لوگ, کچھ لوگ کال سینٹر ٹریننگز کے اندر ہم لوگ نے ان کو لے کر آئے تھے. ڈیف لوگوں کو ہم نے گرافک ڈیزائن اور ٹیکسٹائل ڈیزائن ٹریننگ کی طرف لے کر آئے تھے. فزیکلی امپیئرڈ لوگوں کو باقی اور مختلف اسکلز اور ہنر کی طرف لے کر آئے تھے. تو شناخت, تعلیم, فلاح, ہنر. جب ہنر, شناخت اور تعلیم مل جاتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزگار کے مواقع ڈھونڈیں. باقی یہ سب اسٹیپس تھوڑے آسان ہو سکتے ہیں, لیکن روزگار دینا اور دلوانا آئی تھنک سب سے بڑا آئی تھنک ایک چیلنج ہوتا ہے, چونکہ وداؤٹ ارننگ اے لائیولیہڈ, اکنامک لائیولیہڈ بہتر کرنے سے آپ اپنی زندگیاں بہتر نہیں کر سکتے. تو جو سب سے بڑا ہمارا کنٹریبیوشن ہے, آئی فیل ایز Nowpdp ایز این ادارہ, اس کے ہم لوگ نے کارپوریٹ سیکٹر میں معذور لوگوں کے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں, کالیگس ہیں, ہماری ٹیم ممبرز ہیں, ان کی جاب پلیسمنٹ سے بڑا فوکس کیا. تو جو جاب پلیسمنٹس ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارا ایک پورا ہیلپ ڈیسک موجود ہے جو رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے اور خود مختاری پرووائڈ کرتا ہے. خود مختاری کے اندر ہر ایک معذور آدمی کو جاب نہ ملے تو ان کو ہم لوگ کوئی نہ کوئی کاروبار کی طرف راغب کرتے ہیں. تو Nowpdp ایک واحد ادارہ ہے پورے پاکستان میں ہماری نظر میں جو کہ شناخت سے لے کر معذور لوگوں کی خود مختاری تک ہر اسٹیپ آف دا وے کام کرتا ہے. ہمارے تقریباً 5 سینٹر ہو جائیں گے اس سال. کراچی میں ہے, سجاول میں ہے جو کہ 2 گھنٹے ٹو دا ایسٹ ہے, ٹھٹا میں ہم لوگ اس سال کوشش کر رہے ہیں اور رورل ٹھٹا ہو گیا ہے ٹھٹا کے اندر. اسلام آباد میں ہمارا آفس ہے اور ہم لاہور میں آفس شروع کرنے والے ہیں. کراچی, لاہور, اسلام آباد کی اہمیت یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر اور بینکنگ سیکٹر میں جابس لگوانا سب سے زیادہ ضروری ہماری نظر میں ہے, چونکہ وہ سب سے بڑے سیکٹرز ہیں اور سروس پرووائڈرز ہیں. تو کراچی, لاہور, اسلام آباد میں اس کی وجہ سے رورل پاپولیشن کو اپیل کرنا اور بھی ضروری اس لیے چونکہ معذور لوگ جو کہ دیہاتوں میں رہتے ہیں, رورل ایریاز میں رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی رسائی نہیں ہے. شہر میں تو شاید پھر بھی مواقع مل جاتے ہیں, نان اربن سینٹرز کے اندر یہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ ایڈریس کرنا چاہیں. تو Nowpdp کا جو منشور ہے وہ ہے شناخت سے لے کر خود مختاری تک ہم معذور لوگوں کے ساتھ کام کریں, ان کی راہ ہموار کریں اور ان کو ہم آگے لے کر ہمارے ساتھ بڑھیں. اور اب تک تقریباً 10,000 سے زائد لوگوں کے ساتھ ہم کام کر چکے ہیں. تو مطلب اینی تھنگ ایلس؟ No, I think thank you everyone for being here. So Nowpdp when we founded it, we didn't want this to be a typical charity institution. ہم نے ایک سروے کیا تھا اس سیکٹر کا, اینڈ اٹ واز شاکنگ ٹو سی کہ پاپولیشن سائز آف کراچی suffers from disability in this country, and 95% of them don't have any access to proper health or education. And I think it was shameful for us as a nation to be treating our people like this, our own citizens, just because they were not out of sight, out of mind. So we did a focus group survey all over the country in Karachi, Lahore, Islamabad, Pindi, Quetta, Peshawar, all the stakeholders, to see big kahani kya hai, kya issue hai, kya why is it such a big problem. And the biggest problem was that you have a lot of people who are operating in their own nooks and corners. کونے میں پڑے ہوئے ہیں, اپنا چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنا دیا because of some personal tragedy within the family, experience, or for whatever reason they were brilliant, but each one of them was operating very, very differently. Government mein this is a very, very specialized subject. Government has no knowledge. Even if you have good people, politicians or bureaucrats, they have no clue kaisa karenge. Corporate sector absolutely zilch. Again, they have no idea what to do, how to do, etc. So because of that, so we said, okay, let us, instead of making another center where you have 100 people trained kar diya, hamare dil khush ho jayenge, let's do something strategic. And that's why we came up with network of organization working for people with disabilities. So we said, let's create a platform where we bring all the stakeholders together, do advocacy, policy change,
look at in very strategic way what exactly are the problems and how we can do it together. एक चीज़ हमने दो तीन हमारे प्रिंसिपल्स है. एक तो हमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद नहीं बनानी थी. We said we have to go with collaborative. As they said, the sum is greater than the parts. So we've gone for a very collaborative model. And also, this is not a charity. What we do is we've never ever given any money to anyone in our entire history. We partner, we will do their capacity building, we will empower them, we will give them opportunities, but we do not dole out money, number one. Number two, we do not at all say कि किसी के तर्ज खा के आप इनके हेल्प कर रहे. We absolutely do not. हमारी philosophy है people with disabilities are special, people with special abilities. So it's about inspiration, it's about collaboration, it's about mutual benefit. And even in the corporate sector, wherever we've been working last 12 years in jobs, etc., we give a very strong value proposition. मैं कोई CEO का भी फ़ोन कर लूँ कि भाई यार ये जॉब दे दो, कोई मसला ही नहीं है, हम थोड़ा सवाब कमा लेंगे. That's not the thing. We say कि यार you know by keeping people with disabilities, आपका corporate culture सही होगा, आपकी empathy आएगी आपकी employees में, service levels will start going up, you get a much more diversity in your work culture, and that is the value proposition where we give it to them, and it has worked wonders for the companies. State Bank of Pakistan with President Alvi, we worked on creating a very specific policy which Nowpdp authored. Umar was championing that. So now all the banks in the country, not only the presidents but the entire boards of all the banks are required to employ people with disabilities, give them loans, make branches for accessible. So we offered this entire thing. So impact can be for hundreds of thousands of people, and that is meaningful impact. मौजूद होंगे by the middle of this year, जो कि पूरे पाकिस्तान में ही काम कर रहे होंगे. हमारी कोशिश ये अर्बन रूरल सेंटर्स में दोनों में मिल के काम करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हिडन माजूरी की पॉपुलेशन, हम ऐसे कई गाँव के अक्रॉस आते हैं जहाँ पूरी आबादी स्टंटेड है, जहाँ पूरी आबादी पानी की ख़राब होने की वजह से विजुअली इम्पेयर्ड है, मोतिया हुआ है उनको. ये हमने बहुत से ऐसे सैलिनेशन की वजह से. तो ये हमारी रिसर्च ने जब दिखाना शुरू किया तो उनके पास, और कभी कभार डायबिटीज़ की वजह से ये लोग गैंग्रीन हुआ है, जिसकी वजह से एम्पुटेशंस हुए हैं क्योंकि इनकी डाइट्स ऐसी थी. तो जब हम ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी आबादी के थ्रू आते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें कितने आगे जाने की ज़रूरत है. और वही जो अमीन साहब का पॉइंट था कि कोलैबोरेटिवली इसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हम एक छोटा इदारा है, हमारे पास सिर्फ अकेले पास ये रिसोर्सेज नहीं है कि हम लोग ये कर सकें. तो ये आई थिंक माजूरी ऐसा वाहिद टॉपिक है जो आप पॉलिटिकल डिवाइड की किसी भी साइड पे गिरें, लोग मिलके काम करने के लिए तैयार होते हैं. तो हम जहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अलवी के साथ इसी कमरे में बैठ के MoU साइनिंग करते हैं फर्स्ट लेडी के साथ, वहीं हम चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ बैठ के हम काम करते हैं कि सेंटर्स अडॉप्ट करने हैं हमें सिंध गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग्स हैं, जो कि पहले घोस्ट बिल्डिंग्स होती थी, लेकिन अगर आप हमें दे देंगे तो उनको हम आबाद कर देंगे. तो वो ऐसी वाहिद जगह है जिस मैरियट में ही बिल्डिंग में बैठ के हमने PPP और PTI के दोनों तरफ के लेजिस्लेटर्स को बिठा के कहा था कि हमें माजूरी पे साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि कल आपको या मुझे किसी को भी इम्पैक्ट कर सकती है. तो हम फॉर्चुनेट भी हैं कि हमारे पास सपोर्ट है गवर्नमेंट सेक्टर की भी, हम फॉर्चुनेट है कॉर्पोरेट सेक्टर की भी, और अब हम बहुत खुशकिस्मत है कि कराची यूनिवर्सिटी जैसी वार्सिटी जो है वो भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि उसके बगैर आई बिलीव कि कराची जैसे शहर के अंदर अगर KU आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ना ले माजूरी की इंक्लूजन पे, तो फिर हमारा काम जो है वो पूरा नहीं हुआ. तो अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब और आपकी टीम को कि आपने वक्त निकाला और आज हमारे साथ आए. और थोड़ा सा ओवर टू यू सर, इफ यू हैव एनीथिंग. University being the largest university in Pakistan in terms of the number of students, we have 46,000 plus students day in day out at university campus, again which includes 103 differently abled reported students, right? Those who have taken admission in the University of Karachi on the special quota that we have here. And obviously, again first let me introduce the Vice Chancellor, University of Karachi. He has been in the University of Karachi since 1980s, late 1980s.
and he's done wonders in management at University of Karachi. He's been taking care of the management University of Karachi since the past 3 years, being the Vice Chancellor of University of Karachi, and he has taken many initiatives. This, again, the formation of student societies was also one of the initiatives, but again, let me put this first, that the formation of an inclusive student society, especially to give platform to the differently abled students of University of Karachi, was all in all inclusively his idea. He said, I will take care of this particular society, and again, let us gather all these students, and we did that. And what we try to do is gather all the differently abled students on this one platform and try to train them and try to engage them in different programs of other societies that we do. Again, debate, music, arts and theatre, whatever we do, we try to engage them. And that is again a very good initiative that we have been doing. And he has been obviously instrumental. He is an internationally recognized professor of public administration. And Alhamdulillah, university has in the last 3 years has taken initiatives to make the university student centered. And again, when we say student centered, it is all the students that we are referring to, not a specific set of students that, again, some would like to call them normal and the others would be differently abled. Every student is equal and we treat them equally and we include them. We believe in this philosophy of inclusion and we include them in every program. Kashan is here. Kashan was one of the contacts. Kashan came with Ali Haider to me. Or I was telling Ali Haider that my first contact with Nowpdp and Amin Hashwani Saab was back in, I think, 2013-14 when we did a project. इमरान जो रिक्शा प्रोजेक्ट था उसमें हमने किया था. फिर हमने एक बीच लग्जरी का 007 की जो रिवैम्पिंग थी, एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट था ELP, आई डोंट नो इफ अमीन साहब रिमेंबर्स, वो किया था. तो अगेन आई नो दैट again this organization has been doing very good projects, and we wanted to take this inclusive student society to a new level as well, and to help students help themselves. Obviously हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, obviously it is not that level, वो स्टूडेंट इंटरमीडिएट करके आ रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में अगेन जाके अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे होते हैं. तो हमारे पास जो स्टूडेंट का एक तो लेवल आता है और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दैट इज समवॉट डिफरेंट. वो ऑलरेडी एजुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं. तो अगेन व्हाट वी विश टू do for them is to create employment opportunities for them, to train them for specific employment opportunities. हमारे यहाँ स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट स्पेशल एजुकेशन भी है जो कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, जो कि साइन लैंग्वेज के हवाले से और जो कि स्पेशल स्टूडेंट्स को ट्रेन करने और उनकी एजुकेशन के हवाले से स्पेसिफिकली काम करता है. तो वो भी एक बड़ा हमारे लिए एक ज़बरदस्त चीज़ है और उसके थ्रू भी हम काफ़ी सारा काम करते हैं. तो आई होप कि दिस पार्टनरशिप, एंड अगेन वी ऑल्सो बिलीव इन कोलैबोरेशन, एंड आई थिंक कि हमें कोलैबोरेट करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि हम तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस पर्टिकुलर इशू पे उन सबको आगे कर सकें. वाइस चांसलर के पास जब मैं गया तो ही डिड नॉट टेक अ सेकंड कि जी इसको हम नहीं करते. इन्होंने कहा फ़ौरन भेजें. मेरी अली से बात होती रही, एंड अगेन नाउ वी आर हियर. Thank you. So, sir, please. Sir, जी बहुत शुक्रिया. I think today is an important event for me. बहुत सारे हम MOU साइन कर रहे होते हैं, but this is a noble cause. The cause is important. And हम अपने माशरे में person with disabilities का केयर नहीं करते. गवर्नमेंट लेवल पे तो है ही नहीं. There are certain NGOs जो कि थोड़े बहुत काम कर रहे होते हैं. At the University of Karachi, we firmly believe कि हमें ऐसे लोगों को प्रमोट करनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट करनी चाहिए, उनको हेल्प करनी चाहिए. तो एक तो हमारा एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हमारा स्पेशल कोटा है जिसमें कोई भी डिसेबल लोग जब अप्लाई करते हैं तो हम उससे एडमिशन देते हैं. और एक रिक्वायरमेंट है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट पूरा करता है. तो डिसेबिलिटीज़ के लिए कोई फिक्स कोटा नहीं रखा हमने. एक ईयर के अंदर जो भी अप्लाई करे वो जितने भी डिसेबल लोग होते हैं हम उन्हें एडमिशन देते हैं. पहला काम तो ये हमारा. दूसरा काम, व्हेन आई केम टू रियलाइज कि जी डिसेबिलिटीज़ के अंदर हम फ्री शिप दिया करते थे ओनली फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट, उसको हमने चेंज किया. हमने कहा जी डिसेबिलिटी किसी भी वजह से हो, द स्टूडेंट विल गेट अ फ्री स्कॉलरशिप. ठीक, तो सिर्फ एक स्पेशलिटीज़ को अगर केयर करें तो बाकी लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन थी. सो वी टुक अ डिसीजन कि जो लोग भी इस कैटेगरीज में आते हैं दे विल हैव अ स्कॉलरशिप, फ्री शिप, उनको कोई पे नहीं करनी पड़ेगी.
Then the third step was using technology to help these students. ठीक है, कंप्यूटर होने के बावजूद भी हम लोगों को अलाउ नहीं करते थे कि वो अपने पेपर को सॉल्व कर सकें. ठीक है, यू सपोज टू हैव अ राइटर, और राइटर को आप क्या बता रहे हैं, राइटर क्या लिख रहा है, दैट वाज द प्रॉब्लम. सो आई थिंक एक साल पहले जी we allowed at the University of Karachi that the student can use the technology, people with disabilities, to solve their papers. ठीक है, उससे आई थिंक द स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अप्रिशिएट किया. ठीक, और मैं समझता हूँ कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हमें हमदर्दी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कोई एपैथी की बात नहीं है इसके अंदर. We should consider them as a part, as an equal citizen. ठीक है, और पूरे माशरे में, पूरी दुनिया में यही हो रहा होता है. ठीक है, हम अफसोस नहीं करने की ज़रूरत है. ये अल्लाह मियाँ की मर्जी होती है, या कोई वाक़े की वजह से कोई डिसेबल हो जाता है. ठीक, और ये चीज़ मेरे बहुत क्लोज इसलिए भी कि मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनके बच्चे डिसेबल्स हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अपने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी उन्होंने उन बच्चों को अपने साथ नहीं रखा. मैं कुछ लोगों को ऐसे जानता हूँ जो कि उनके अपने रिसोर्सेज बहुत मीगर किस्म के हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने उन बच्चों को अपने साथ रखा, उनका केयर किया, उनको प्रमोट किया. ठीक है, तो जिस तरीके से आप इस सोसाइटी में रहते हैं, मैं भी उस सोसाइटी में रहता हूँ, एंड आई रियलाइज कि हमें इन बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए केयर करने की ज़रूरत है. तो जब आसिम टॉक अबाउट दिस पार्टनरशिप, मैंने कहा जी दिस इज द बेस्ट वी कैन ऑफर टू आवर सोसाइटी, दैट्स आवर पार्टनरशिप, राइट. और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जैसे इन्होंने बताया कि वी हैव अ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जहाँ स्पेशली वी ट्रेन पीपल के स्पेशल बच्चों को कैसे एजुकेशन देते हैं. ठीक, सो वी हैव एक्सपर्टीज, एंड इंशाल्लाह विद योर कोलैबोरेशन वी कैन अरेंज train the mindsets, because these will be our future leaders. And I think addressing this particular issue subject, there is an opportunity to change. Like हम corporate sector में हम कहते हैं कि you know culture, organization culture eats strategy for breakfast, right? This you understand very well. So how, and I think one could look at how do you change the culture of the entire university through this particular one initiative. Of course, there should be multiple. This could be a very good. And our experience in the corporate sector, we've done with the Unilevers, the Engros, all of the 7 companies, the sensitization we do for staff. And we were shocked to see it's not just at the lower level, but even at the corporate managerial level, we have people who have pretty warped ideas and concepts on these. And I think it is about to do lack of empathy, lack of understanding, it becomes blurred, right? So it's the society that actually creates most of the barriers. If you can just enable me through this glass, I become completely able, right? If I remove your glasses, and if you have a reading glass, you'll become illiterate. You will not be able to read. So I think this kind of thing, you need to, so it doesn't become the others, they, and we need to do something for them. No, it's you know, we need to do some self-reflection within ourselves. Are they actually disabled, or it's we who are making them disabled? You turn the tables around. This kind of stuff you start doing with these students, you start making them think out of the box. And eventually the goal is to make them better human beings. And I think that is something that's really lacking, not just in this country, but around the world. Your university can actually, and we will be more than happy to collaborate on this front. So you can use the disability as a subject to achieve a much broader goal. And if the university is willing, we will be more than happy to collaborate in this front and do a sustained thing to basically change mindset and create better human beings. So with this, you know, the MOU is there, we'll do that, but this is something I would request you guys to consider. Sure, absolutely. On signing this MOU, we have to, because again, we have a leadership
that is continuously pushing us to do things rather than sign just a few documents. So again, inshallah. And even from Nowpdp, what really distinguishes us is we work like a pure corporate sector. Balki not just corporate sector, but like a startup venture capitalist company where we do a lot of innovation. If you see all our verticals, we take risk and we fail fast and we move forward, right? So almost all of our programs are original, and it's a lot of them actually out of the box. And the reason for this is, if you want to do some meaningful impact with limited resources, you need innovation. Yeah, so this is what really distinguishes us, and we're all about action. So inshallah, you will find that it will be a good collaboration. Sir, please, let's. Thank you.